This meeting is being recorded. Good afternoon to all present. It is my great privilege to welcome you all to the Malaviya Mission Teacher Training Program, which are going under the Malaviya Mission Scheme of the University Grant Commission. I am delighted to extend a special welcome to our distinguished guests and speakers, starting with Padam Shri Dr. Poonam Suri, Chairperson, HANSRAJ College, New Delhi; Dr. Rama, Principal, HANSRAJ College, New Delhi; Dr. Sandhya Rani, Chief Patron and Regional Higher Education Officer, Bareilly Muradabad Mandal, Bareilly; Dr. Narendra Batra, Patron and Principal, Government Degree College, Budaun; Mr. Ashutosh Yadav Sir, Coordinator, HANSRAJ College; and our Chief Guest, Professor P.B. Singh Saab, Dean Student Welfare and Dean Management Studies, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand Vishwavidyalaya, Bareilly; and Dr. Anurag Kakkar, Dr. Deep Sikha Yadav, and our resource person, today's resource person, Professor Mansaf Alam Saab from Jamia Millia Islamia University, New Delhi. We are grateful for our presence and we thank you for being a part of this important initiative. This 10-day online teacher training program from October 1 to 10, 2024 is a collaborative effort between Government Degree College Budaun and HANSRAJ College, New Delhi. It is affiliated to Delhi University. The main objective of this program is to provide educators with the necessary knowledge and skills to implement the National Education Policy 2020 effectively.
The NEP 2020 represents a informative towards an India-based education system grounded in Indian culture and values. It emphasizes multidisciplinary learning, experiential learning, and development of critical thinking and problem solving skill among students. Through this training program, we aim to align our teaching practices with the principles and goals of the NEP. The importance of this initiative cannot be overstated. As educators, it is our responsibility to play a significant role in the educational transformation, ensuring that the NEP is implemented successfully while preserving the essence of India's rich culture heritage. Before we proceed, I would like to give a few important instructions to the participants. Attendance is mandatory. Participants who do not mark their attendance will not be issued certificate. It is very important fact. Daily attendance needs to be marked daily, and in both sessions the organizers will constantly monitor attendance. So please make sure to adhere to this requirement. In conclusion, I would like to hand over the proceedings to Dr. Shraddha Gupta, coordinator of the program and head of the Department of Physics, Government Degree College, Budaun, to continue with the event. Thank you. Thank you all. Dr. Shraddha Gupta, please. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, you are audible. Thank you. Before I begin, Almighty, who has granted us the strength and wisdom to gather here today. Now, I would like to invite our respected principal and patron, Dr. Naren Kumar Batra, to welcome all the delegates and give us blessing for this program. Principal Dr. Naren Kumar Batra, sir. I think he's not joined yet. Okay. Now, We give the permission, sir, so that they can open the video because it's a vlog. okay. सर होस्ट को बोल दीजिए वीडियो का मैं ऑडिबल होस्ट के पास वीडियो ऑन करने का ऑन कर दे मैं ऑडिबल संजीव सर मैं ऑडिबल थैंक यू सर गंगा जमुना तहजीब की शहर बदायूं से सभी को नमस्कार A warm welcome to everyone present here today. ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम ये 10 days वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं. I am grateful to UGC New Delhi in collaboration of Malaviya Mission Training Center with collaboration of HANSRAJ College and our college.
to conduct a wonderful program for the sake of new education policy. The purpose of this program to how to elaborate enhance the knowledge of our educator in light of new education policy. किस तरीके से हम प्रमोट करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो कारगर हो हमारे युवाओं के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज कन्वर्ट हो एजुकेशन इकोनॉमी के लिए. हाउ टू यूज आईसीटी इन education and provide each and every information that convert into a skill. The purpose behind new education policy, National Education Policy 2020. For this purpose, we are going to organize this workshop. In this workshop, मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं हमारे इस कार्यक्रम की पैट्रन प्रोफेसर संध्या रानी जी, जो कि बरेली मुरादाबाद मंडल की क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं. और इस कार्यक्रम को आज अच्छे से रूपरेखा बताने, उस कार्यक्रम का पीछे उद्देश्य बताने हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर पीबी सिंह सर, डीएसडब्ल्यू महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय. साथ ही हमारे साथ जुड़े हंसराज कॉलेज की ओर से पद्मश्री प्रोफेसर पूनम सूरी जी, चेयरपर्सन, और हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रामा जी, और कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के तौर पे और रिसोर्स पर्सन के तौर पे हमारे संग जुड़े जामिया मिलिया से रिसोर्स पर्सन, और इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने के लिए तत्पर रहने वाले आशुतोष यादव जी, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मैडम यादव, और इस पूरी टीम को रचा बसा के इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने के लिए डॉक्टर संजीव राठौर जी और श्रद्धा गुप्ता जी. बस पर्पस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन कि हाउ टू यूज आईसीटी, हाउ टू यूज नॉलेज टू कन्वर्ट इनटू अ स्किल फॉर सोसाइटी, बिकॉज एजुकेशन इज ओनली अ वेपन टू चेंज द सोसाइटी. इसी उद्देश्य के संग राष्ट्र विकास के लिए, मानव विकास के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि हम विश्व गुरु बने, उस गुरु बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत इस हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं. मैं आशा करता हूं कि इस 10 दिवसीय शिविर के कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चित तौर से हम लोग इनरिच होंगे, हम बड़े बड़े विद्वानों को के उद्बोधनों से, और उन उद्बोधनों को अपनी प्रणति में लेते हुए हम अपनी कक्षाओं के माध्यम से या अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं तक पहुंचाएंगे. आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन, धन्यवाद. प्लीज कंटिन्यू. श्रद्धा मैम. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words of encouragement and for your persistent effort in organizing this program. Your leadership continues to inspire us all. Next, I would like to invite our Chief Patron and Regional Higher Education Officer, Bareilly Moradabad Mandal, Dr. Sandhya Rani ma'am. Dr. Sandhya Rani ma'am, पैनलिस्ट अगर चेक करें, मैम अगर ज्वाइन की हैं, देन उनको अलाउ करें टू स्पीक. I think some technical issues से मैम जुड़ नहीं पा रही हैं अभी. Now we are privileged to have with us today Professor P.B. Singh, Dean of Student Welfare at MJP Royalkhand University, Bareilly, as our chief guest of this inaugural session. His vast experience in student welfare and academic leadership makes him an ideal speaker for today's program. So please welcome Professor P.B. Singh. So please welcome. Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, sir. Actually, there is a technical glitch going on here.
sometimes the power failure, sometimes the internet problem, connectivity problem. So earlier I was on my laptop. Now I have switched to this mobile so that I may remain in line with the flow of the training program. I don't know how many of the people are present. The list has been provided to me. So I would like to welcome all those who are listed with me here from HANSRAJ College, Padma Shri Dr. Poonam Suri, if she has joined, Dr. Rama, Principal, then Dr. Sandhya Rani, Chief Patron of this session, and Regional Higher Education Officer, Bareilly Moradabad Mandal, Dr. Naren Batra, Principal of Government Degree College, Budaun, Dr. Sanjeev Rathore, Convener of this teachers training program, and Professor of Physics Department of that college, Dr. Shraddha Gupta, Program Coordinator, Dr. Rakesh Kumar Jaiswal, again Program Coordinator, Ashutosh Gupta, Coordinator from HANSRAJ College, Deepshika Yadav, Deputy Coordinator, Dr. Anurag Kakkad, and other members of the organizing committee from Government Degree College, Budaun, like Dr. Ravinder Singh Yadav, Dr. Satish Singh Yadav, Dr. Sachin Kumar, and Dr. Sarita. And dear participants, first of all, I would like to inform you that there is some problem. My video cannot get on because host has not enabled it. So till it is done, we will continue like this only. It's a matter of great pride to know that under the aegis of Malaviya Mission Training Program of the UGC, HANSRAJ College, New Delhi, and the Government Degree College, Budaun, are jointly organizing this academic event for 10 days. That is from 1st of October to 10th of October 2024 in an online mode. Now, the teachers from various states across the country are participating in this training program. I got a chance to have a glimpse over the number of participants. 5-10 minutes back, it has crossed 120. So that's a good figure. I think the basic purpose of this training program is to orient the teachers towards the National Education Policy 2020. We know already 4 years have passed and various seminars, webinars throughout the country are being organized to make people aware and orient about this national education policies. That is a policy which this government has brought up and which aims at restructuring and re-engineering of the total education policy which used to exist earlier. In fact, for the successful implementation of this National Education Policy 2020, the Government of India has provided facilities to train teachers through various means. Now, taking the lead, the Government Degree College Budaun has prepared a draft to make, along with the HANSRAJ College, to make people aware and promote the cause of National Education Policy 2020. I welcome this step and I appreciate the efforts done by both the colleges for conducting this program in the benefit of all those beneficiaries who will be benefited out of this NEP and all those mentors who will also be able to execute the NEP as per the format defined. We must fulfill our duty to contribute to the successful implementation of this NEP. And it has to be done in a very time-bound manner. We have to re-establish the Indian-based education in the country, which is obviously based on the Indian values. We have read, and our generations have been the witness to see that number of attacks have been done in the past, in the past era, I should say. This attack has been done on the ancient education system of our university. When the Britishers were there, when they ruled the country, the Macaulay education brought the policy
for education, which we continued for a very long time. And still, up to the policy which was framed in 1992, we carry on with Macaulay's policy. Though that policy, the education policy which used to exist of that time, it basically focused on developing the human resource and international cooperation and went for peaceful coexistence. The subjects which were taught were in isolation because there was no connectivity between the subjects. And the students used to learn through memorization. For that reason, the NEP, National Education Policy 2020, came into existence, wiping out all those irregularities which used to exist of that time. Now, NEP basically aims to promote the critical thinking, creativity, and problem solving skills, and it encourages the holistic development of the students. As a result, Indian cultural based education system, we found it has gone down, and it was observed that it became more or less westernized, which was not a good sign of the country. So this NEP came into existence in 2020. We gave the world the university system which was based on Takshila and Nalanda University, which used to host the system based on Gurukul Paddhati. Our Vedas, through universities like Sampurnanand Sanskrit University, have taught Sanskrit, which was translated into their language, and it became popular worldwide. The manuscripts were translated. Now, this has placed India in the category of developing countries while considering themselves developed. We are still at the developing phase, but those countries who took our knowledge base are considered to be more developed. So some efforts need to be done so that we also come to that level of being called as a developed country. Now, let us not forget that our language, Sanskrit, is very, very scientific. It contains all the qualities of technical and medical science. Despite numerous attacks on our country, our education system continues to provide lessons to the world. Keeping all these things in mind, on 29th of July 2020, the Union Cabinet of India approved the new education policy, which replaced the old education policy of the country. Now, this NEP is based on few fundamentals. We all know that those 5 pillars: access, equity, quality, affordability, and accountability. That means access to all, equity, knowledge, education to all, that is equity, quality education, affordable education, and education in such a manner which makes people accountable. The aim and objectives of NEP 2020 are more focused on the holistic development of the students, and it also focuses on inclusion of all type of students, irrespective of their caste, color, creed, religion, and physical ailments. NEP 2020, being the newest edition, has brought reforms in the education sector. Therefore, it is necessary for each one of us as teachers to understand the basic objective or aim of the NEPs. The basic aim of NEP is to make the education universally accessible right from primary to secondary level by the year 2030. Now, it helps in building a relationship between the learner and the society at large. Every child is a special child and has the right to get the basic education, for which the government has made several provisions. The primarily objective of NEP are: number one, it focuses on early childhood care and education. That means it focuses on the child from age 0 to age 8 years, and that is a phase when a child passes through different types of changes: physical changes, socio-emotional changes, cognitive development changes, and so on. So that is the time when
good things are faded into the gray matter of the child, it remains fairly stable for a very long time. So that thing has been taken care of by the NEP 2020. Second, the objective focuses on the foundational literacy and numeracy. That means up to the grade 3, student should be made to learn not only to learn the use of alphabets, but also the numeracy part, the mathematical part, which sharpens the mind, and he remains calculative. Uh, because nowadays we find this thing is missing in the early childhood. So most of the students are scared of maths. So the attempt is to make people be attracted towards the math subject. So that is a good point of this NEP 2020. The third objective is to curtail the dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. Now, this new education policy has focused on two things. Am I audible? Hello? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. Okay. Now, this policy basically focuses on two things. First is to lessen the dropouts by ensuring proper infrastructure facilities, and second is to provide training to the teachers. This is what today's session is focusing on, this training to the teachers about the NEP. Also, to encourage the students to continue their studies, the students are monitored and facilitated with the proper educational environment. The ones who are dropped out of the school are again encouraged to come and join. Fourthly, it focuses on the curriculum and pedagogy, especially in school, because learning of any sort should be holistic, integrated, enjoyable, and must be able to engage and hold the attention of the learners towards the subject. So, NEP 2020 is that policy which emphasizes on understanding the topics rather than evaluation of the rote learning which used to exist in the previous or the old education policy. Nowadays, we find focus is more on experiential learning, and it is being promoted. In our university also, we have started 4 experiential learning groups, and the basic objective of that experiential learning is earn while you learn. In hotel management department, we are having one experiential learning group which takes care of the guest house, and earning is being done. For the health center which used to exist in our university, again we have a pharmacy experiential learning group. Students of pharmacy are there. In law, we have experiential learning group which provides consultancy services to the person who are looking for legal advice. Similarly, in engineering, we have an IT clinic which is providing services for repair and maintenance to all those who want to get their laptops and desktops repaired, and they're earning. So this sort of learning should be there. Earn while you learn. Now, another objective is equitable and inclusive education. This we all know, that providing equal education to all, and uh, inclusion. That means involving all type of people, the physically deprived and challenged people also, to come and be in the mainstream of the education. Then technology in education is also important. We know that we cannot get rid of the technology advancements. The only thing is we need to inculcate the technology into our pedagogy so that it becomes more of use to all, and we can spread the basic gist of the basic essence of the NEP 2020. Though some improvements are required, today also we find the problems were there related to connectivity and related to power. Summarize, please. Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, if time is a constant, then I should try to
give my conclusion, if you permit. We know Please that. conclude it. Pardon? Yes, sir, please conclude it. Okay. The overall gist I could say about the NEP 2020 is, number one, it looks for holistic development. Number two, it asks for, number five, teacher empowerment. Then we have assessment reforms and inclusivity and equity. So these are major highlights. And to conclude, I could say that keeping in mind the motto of NEP 2020, that is educate, encourage, and enlighten, I would like to give congratulations and my best wishes to both the colleges, HANSRAJ College and the Government Degree College Budaun, for taking this initiative and conducting this 10 days program for the benefit of all the teachers and trying to make them the mentors of NEP 2020. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your warm wishes, sir. I would like to invite. Yes, sir. Ma'am, with us. Yes, sir. I would like to invite our Chief Patron and Regional Higher Education Officer, Bareilly मुरादाबाद मंडल, डॉक्टर संध्या रानी मैम, और उनके आशीर्वाद के बिना ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो सकता है, और मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. प्लीज मैम. धन्यवाद श्रद्धा जी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर के तत्वाधान में आयोजित हंसराज कॉलेज तथा गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं के इस सम्मिलित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हंसराज कॉलेज की ओर से पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी चेयरपर्सन एवं हंसराज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामा जी, कार्यक्रम के चीफ गेस्ट महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के डीन स्टूडेंट वेलफेयर एवं डीन मैनेजमेंट स्टडीज प्रोफेसर डॉक्टर पीवी सिंह साहब, राजकीय महाविद्यालय बदायूं के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जी, इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कन्वीनर एवं राजकीय महाविद्यालय बदायूं के भौतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर संजीव राठौर जी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश कुमार जायसवाल जी तथा आयोजन समिति के हंसराज कॉलेज के कोऑर्डिनेटर मिस्टर आशुतोष यादव, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मिस दीप शिखा यादव, दूसरे डिप्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुराग कक्कड़, राजकीय महाविद्यालय के आयोजन समिति के अन्य सदस्य डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव, डॉक्टर सतीश सिंह यादव, डॉक्टर सचिन कुमार एवं डॉक्टर सरिता. एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं के फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के मदन मोहन मालवीय मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रचार प्रसार एवं सफल क्रियान्वयन हेतु हंसराज कॉलेज नई दिल्ली के साझा समझौता करके MOU के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 तक एक 10 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शिक्षक इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता कर रहे हैं. वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने जिन माध्यमों से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है, उनका सदुपयोग करके आज राजकीय महाविद्यालय बदायूं ने एक अनूठा आयाम स्थापित किया है. हम सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध तरीके से राष्ट्र का सहयोग करके भारतीयता आधारित शिक्षा को देश में पुनः स्थापित करने का दायित्व निर्वहन प्रथम वरीयता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्र कार्य है और राष्ट्र कार्य सर्वोपरि होता है. वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का ही एक रोल मॉडल है. इस नीति के आधार पर देश को विश्व गुरु बनाया जाना सुनिश्चित है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश विश्व गुरु के पद पर रहा है. हम पुनः इसको विश्व गुरु के पद पर प्रतिस्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है. आश्रम पद्धति के आधार पर हमने विश्व को शिक्षा व्यवस्था दी है.
तथा शिक्षक और गुरु में एक बड़ा अंतर समझा जा सकता है। शिक्षक का शाब्दिक अर्थ है कि जो उसने सीखा अपनी कक्षा में बिना किसी स्वाध्ययन एवं आत्म मंथन किए ही कक्षा में उन भावों को सीधे ही प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है, जिसका दुष्परिणाम राष्ट्र के भावी पीढ़ी एवं छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। दूसरी ओर गुरु का शाब्दिक अर्थ है कि इधर उधर से प्राप्त किए गए एवं अध्ययन किए गए तथ्यों को पहले तो वह स्वयं आत्मसात करता है, उसके पश्चात कक्षा में जाकर उसका प्रस्तुतिकरण करता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में समाजोपयोगी, देशभक्त और ईमानदार व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यही उद्देश्य भी है। शिक्षकों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी शिक्षक समस्त शिक्षकों को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए, आशीर्वाद के लिए। नाउ विदाउट एनी delay, I would like to introduce our eminent resource person, Professor Mansaf Alam sir. He is renowned professor from Department of Computer Science at Jamia Millia Islamia with significant expertise in cloud computing, IoT and big data analytics, artificial intelligence and digital logic design. His academic achievement include over 2070 citation and H index of 24 and I-10 index of 58. Highlighting his impactful contribution to research. He has authored 6 books and has published 98 research papers, 71 of which are indexed in Scopus and hold a granted patent for an AI-based judgment in Australia. Professor Alam is a recipient of prestigious Vishwesvaraya Young Faculty Research Fellowship from the Government of India and has completed major research projects including a DST-funded project worth rupees 17.58 lakh. Internationally recognized, he has presented papers and chaired technical sessions at numerous conferences worldwide, including the USA, UK, France, and Germany. Given his extensive research background, administrative leadership roles, and global recognition, Dr. Alam would be an excellent guest speaker for the upcoming webinar, offering deep insight into emerging technologies and their application in modern computing systems. We are privileged to have him join us today as our distinguished resource person. The topic of his presentation is Information and Communication Technology. So please welcome Professor Mansaf Alam to deliver her presentation. Thank you, ma'am. Thank you very much. Respected Principal, HANSRAJ College and your college, Ashutosh ji, Coordinator, Faculty Member, Organizing Committee, all the dignitary, good afternoon to all of you. Friend, you know, education is very important for human development. It plays a very important role in our development. Similarly, in that education, technology also play a very important role. So, Government of India take an initiative to change the education policy, and now the education policy is 2020. So, मैं उसी टॉपिक पे चर्चा आप सबके सामने मैं बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब हम एजुकेशन में करते हैं तो एजुकेशन का स्तर जो है किस तरह से बढ़ जाता है, इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में मेरा पीपीटी विजुअल होगा सब लोगों के? Yes, sir. It is visible, Yes, sir. sir. And Yes, sir. सो आज के डेट में हम देखने जा रहे हैं कि रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ट्रेडिशनल टीचिंग इन द क्लासरूम। ट्रेडिशनल टीचिंग में हम लोग क्या करते थे कि डस्टर एंड चौक का इस्तेमाल करते थे,
कंटेंट को मेमोराइज करते थे और फिर हम स्टूडेंट को एजुकेट करते थे। बाद में टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें स्टूडेंट से कनेक्टिविटी बनानी होगी। यह सब कुछ आप लोगों को पता होगा कि अगर कनेक्शन नहीं है तो हम मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। कोई भी मैसेज को अगर हम ट्रांसमिट करना चाहें तो कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। इसी तरह से हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन जब क्लासरूम से आप बाहर आते हैं, बच्चों से पूछिएगा कि बेटा समझ में आया, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि कुछ नहीं समझ में, जबकि वही बच्चे पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी पूरे एक डायलॉग के साथ, सॉन्ग के साथ आप सुना देते हैं। यानी कि एक ब्रेन डिफरेंट प्लेस पे कैसे काम करता है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पेज नंबर 1 से स्टार्ट करें, लास्ट तक जाएं और पूरे के पूरी बुक हमारे दिमाग में हो। जबकि आप नॉवेल पढ़ते हैं, नॉवेल की बुक इतनी मोटी होती है लेकिन पूरे के पूरे कंटेंट आपके दिमाग पे आ जाते हैं। तो सोचिए कि क्यों ऐसा होता है। एक ही ब्रेन डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरीके से कैसे काम करता है। There are 4 activities take place in our mind. अगर वो चारों एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो जाए तो सराउंडिंग में जितने कुछ हो रहा है उसके दिमाग पे स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट के। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये होगा कि पूरे के पूरी बुक आपके दिमाग पे आ जाए। क्लासरूम में हम जाए पढ़ाने के लिए तो पूरे के पूरे कंटेंट जो डिलीवर करें आप, वो स्टूडेंट के माइंड पे आ जाए। तो इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता, जितना ही ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन आपके माइंड पे होगा ना, आप उतने ही इंटेलिजेंट कहलाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे पाए। There are 4 activities take place in your mind. First one known as the attention. Second one, rehearsal. Third one, encoding. Or fourth one, retrieval. Attention means just you have to make a network among the people or among the student where you are going to deliver your lecture. आपने सुना होगा 3-4 लोग आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उसमें से एक पर्सन बोलता है थोड़ी देर बाद, हाँ भाई क्या बातें कर रहे हो आप। यानी कि वहां पे है, उसके बावजूद भी पूछ रहा है वो इंसान कि क्या बातें हो रही है। इसका मतलब वहां मौजूद होने के बावजूद वो नेटवर्क में नहीं था। तो जब तक नेटवर्क में नहीं होगा, उस इंसान का ब्रेन जितने भी आप अच्छे से डिलीवर कर दीजिए वो रिसीव नहीं करता। तो सबसे पहले आपको क्लासरूम में जाकर एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना होगा। यानी नेटवर्क एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? बच्चों से बातें करेंगे, क्लास में इंटर करने के बाद थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे ताकि उसका नेटवर्क कहीं और से कनेक्टेड था वो आपसे कनेक्ट हो। उसके बाद आप लेक्चर देंगे तो वो सारे के सारे मैसेज उस स्टूडेंट के दिमाग पर चले जाते। यानी कि जैसे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, उसी तरह से इंसान के बॉडी में इनपुट आउटपुट ऑर्गन्स होता है। तो उस इनपुट आउटपुट ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने का काम टीचर का होता है ताकि all the senses of students are activated so that whatever message you deliver in the classroom that will be received by the student. उसके बाद सेकंड जो स्टेप स्टार्ट होता है स्टूडेंट का या पार्टिसिपेंट्स के माइंड में, जिसको हम कहते हैं रिहर्सल। रिहर्सल मीन्स जैसे भी आपने कुछ वर्ड बोला, उस मैसेज को आपने डिलीवर किया, उस मैसेज को जो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट से या स्टूडेंट रिसीव करता है, तो उसके दिमाग पे कई सवाल आते हैं। अगर उस मैसेज में कोई सवाल आता है कि व्हाट, दैट मीन्स द ब्रेन ऑफ दैट पार्टिसिपेंट, दैट स्टूडेंट इज वर्किंग एज ए स्टूडेंट।
If there are two questions arises in the mind of a listener or participants, audience, or a student, that means the brain of that student, audience are working as a teacher. And if three questions arises in your mind as a listener after receiving a message from the surrounding, what, how, and why, that means your brain is working as a researcher, as a scientist. बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। एक वक्त एक इंसान एक दरख्त के पास बैठे हुए थे, एक एप्पल नीचे गिरता है, सबने देखा, किसी ने सवाल नहीं किया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। जब उन्होंने सवाल किया कि व्हाई दिस एप्पल फॉल डाउन, तो सोचिए उस वक्त कितने लोगों ने उन पर हंसा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रीजन है जिसके वजह से एप्पल नीचे आया है। और उन्होंने रिसर्च करके दिया, इस शख्स का नाम है न्यूटन। इसका मतलब ये सवाल, तीन सवाल जो किया आपने उस मैसेज पे, इसका मकसद था कि आप उस डेटा को क्वालिटी बनाना, क्वालिटी मीन्स एरर फ्री डेटा बनाना, एरर फ्री इंफॉर्मेशन बनाना। इफ देयर इज ए डुप्लीकेशंस, you are going to remove the duplications. If there is a error, you are going to remove the error. If there is a outlier, you are going to remove. यानी इन सारे चीजों को करने के बाद, फिल्टर करने के बाद, वो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको क्वालिटी डेटा बना देता है। उसके बाद स्टार्ट होता है इनकोडिंग प्रोसेस। इनकोडिंग प्रोसेस मीन्स ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। और फिर वो डेटा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और ताउम्र वो डेटा स्टोर रहता है, कभी भूलते नहीं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज द रिट्रीवल। यानी कि जैसे भी आप कोई क्वेश्चन सुनते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, उस क्वेश्चन का आंसर आपका ब्रेन सर्च करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से, उसका आंसर आता है शॉर्ट टर्म और आउटपुट आगे से डिलीवर करता है। ये सिस्टम हमारा ब्रेन का है कि काम करता है। ये चारों स्टेप्स जो है, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। ये चारों स्टेप जब हम नॉवेल पढ़ते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम नोटिस कीजिएगा कि सिचुएशन आपके नॉवेल में होगा या पिक्चर में, आपके ब्रेन को सोचने पे मजबूर करता है कि आप सोचने लगते हैं एक सीन के बाद व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जैसे आप सीरियल देखते होंगे, सीरियल में देखा इस मोड़ पर आकर रुकते हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है एक हफ्ते तक कि अब इसके बाद होगा क्या। और एक हफ्ते बाद जब टाइम आता है तो आपका ब्रेन कहता है कि सब काम पहले कंप्लीट कर लो और फिर हम सीरियल देखते। तो वहां पे रोल है डायरेक्टर का, नॉवेल को लिखने में रोल जो है आपका नॉवेल राइटर का। और जो टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक आप पढ़ते ही जाएंगे, बिल्कुल समझ में आता है, कुछ टेक्स्ट बुक नहीं समझ में आता है, तो वहां पे टेक्स्ट बुक राइटर का ही रोल होता है। यानी कि हम उस कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि जो लिसनर है, रीडर है, वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि व्हाट विल नेक्स्ट, एंड उसके दिमाग पे क्वेश्चन आए और उसका क्वेश्चन का आंसर आगे मिले, तो फिर वो कंटेंट परमानेंटली हमारे दिमाग पे स्टोर होता है। तो इस तरह हमारा ब्रेन काम करता है। अब हम देखते हैं आगे कि जो एनईपी है, एनईपी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हमें इसको जानना होगा। एनईपी में कहा गया है कि रिसर्च एंड इनोवेशन, आप अपने एजुकेशन में रिसर्च करें और एजुकेशन को इनोवेशंस बनाएं। इनोवेशंस मीन्स आप कोई चीज, इनोवेटिव चीज को डेवलप करें या अपने एजुकेशन में, पढ़ाने में इनोवेशंस लाएं। आप अच्छे तरह से रिसर्च करें। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी, रिसर्च एंड इनोवेशन। सेकेंड वन, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रेडिट ट्रांसफर। इसमें कहा गया है कि हर एक इंस्टीट्यूशंस को, हर एक कॉलेज को, हर एक यूनिवर्सिटी को जो आपका करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए
और उसमें प्रोविजन होना चाहिए क्रेडिट ट्रांसफर का। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है कि एक स्टूडेंट आपके कॉलेज में पढ़ा और 4 क्रेडिट अर्न किया और वो ट्रांसफर होकर किसी और कॉलेज में चला गया, वहां पे उस क्रेडिट को आपको ऐड कर, यानी ये मेंशन है हमारे एनईपी। अब यहां पे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, आईसीटी की जरूरत होगी। यानी कि जितने सारे स्टूडेंट है, 10,000 15,000 स्टूडेंट है, तो आप मैन्युअली मैनेज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट मीन्स यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी टू store the credit of a particular student and how much credit transferred, how many students credit transferred, that all record you have to keep record in your computer with the help of ICT. So ICT play a very important role here. Next one, objective, dismantling of the UGC and ICT. नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन। एनईपी में कहा गया है कि आप सब लोगों को स्टूडेंट को का स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। आप स्टूडेंट को कैसे स्किल्ड बनाएं, आपको वोकेशनल एजुकेशन देना होगा, प्रोफेशनल एजुकेशन देना होगा, ताकि स्टूडेंट पढ़कर सोसाइटी में अपने रोजगार ले सके, कुछ अर्निंग कर सके। अगर उसके पास स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, कुछ नॉलेज है, तो आसानी से कुछ भी कर सकता है, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है या किसी फॉर्म में जाकर काम कर सकता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी, फाइनेंशियल सपोर्ट टू असिस्ट स्टूडेंट। यानी अब हमें स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल मदद भी करनी होगी। कुछ बच्चों को पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हमें कुछ मैकेनिज्म बनानी होगी कि हम अपने स्टूडेंट को जो वीक है उनको कैसे हम मदद करें उसके एजुकेशन में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू इनकरेजमेंट टू यूज इंडियन लैंग्वेज। अब कहा गया है कि आप जो पढ़ाते हैं, आप अपने स्टूडेंट को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए, इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाइए। अब आपके लिए बड़ी मुश्किल है कि आप जो नोट्स बनाए हैं या आपका पीपीटी है उस हिंदी में है या इंग्लिश में है। लेकिन इंडिया में आपको पता है 222 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, और आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़ाना है तो एक टीचर के लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी बताऊंगा या आईसीटी टूल्स बताऊंगा जो आपके नोट्स को इंडियन लैंग्वेज में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। जी सर बोले। अभी सर एक ही स्लाइड पे देखिए, इसी पे बोल रहा हूं मैं, ये ना संजीव जी, हमारा पीपीटी में क्या दिख रहा है आपको? हमारे पीपीटी आपको क्या, कौन सी पीपीटी दिख रही है? यही दिख रही है ना, एक होलिस्टिक रिसर्च इनोवेशन करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। ओके ओके, सॉरी, जस्ट मैं समझ में आ गया प्रॉब्लम। यू आर राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ अब देखिए पीपीटी मूव हो रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो नेक्स्ट है इनकरेजमेंट टू यूज इंडियन लैंग्वेज। यानी अब आपको इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाना होगा, चाहे आप बंगाली में पढ़ाएं, चाहे गुजराती में पढ़ाएं, या भोजपुरी में पढ़ाएं, संस्कृत में पढ़ाएं, या आप मलयालम पढ़ाएं, आप तेलुगु में पढ़ाएं, तो आप टीचर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना। तो
तो मैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी को बताऊंगा जो आपका नोट्स बना हुआ है, उसी नोट्स को कन्वर्ट हो जाएगा आपको इंडियन लैंग्वेज में। वो पीपीटी भी है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका वॉइस है, आपके वॉइस भी इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको। ये फोकस किया गया है एनईपी में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब कहा गया है कि हर फील्ड में, किसी भी फील्ड ऑफ एजुकेशन में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, फोकस किया गया। यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपको यूज करना है। डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन लर्निंग का भी फोकस किया गया एनईपी में। तो आप देखेंगे कहा गया है कि डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन लर्निंग पे आपको फोकस करना है। डिजिटलाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब इस एनईपी 2020 में कहा गया है कि आपको टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, आपको उसको डिजिटल बनाना है। फिर इंटरनेशनलाइजेशन करना है आपको, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इनहेंस जीईआर टू 50% बाय द ईयर 2035 पे कहा गया है एनईपी में। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड होलिस्टिक एजुकेशन हमें देना है अकॉर्डिंग टू एनईपी टू आवर स्टूडेंट्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो ये रहा आपका छोटा सा ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ और हम कहां पे आज के डेट में हैं। तो पहला एजुकेशन मेरा स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं एजुकेशन 1.0। एजुकेशन 1.0 में लेक्चर एंड मेमोराइजेशन, नो टेक्नोलॉजी यूज इन द एजुकेशन। जो शुरू में मैंने बताया कि कैसे हम लोग डस्टर एक चौक लेकर, अपने बुक्स को लेकर कंटेंट को मेमोराइज कर लेते थे और क्लासरूम में जाकर डिलीवर करते थे, वो एजुकेशन था हमारा 1.0। उसके बाद एजुकेशन 1.0 में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ। हम टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किए, तो बर्थ हुआ हमारे एजुकेशन 2.0 का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन। फिर हमने उसमें एजुकेशन 2.0 में इनहेंस किया और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन दिया। यानी कि इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन 2 में हमने पीपीटी स्टार्ट किया, यूट्यूब किया, लेकिन नॉलेज बेस्ड में मोर टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करना शुरू कर दिया। और आज के डेट में जो एजुकेशन चल रहा है, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन 4.0, अभी जो एजुकेशन चल रहा है वो एजुकेशन 4.0 है। इसको हम कह रहे हैं इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन। एंड कमिंग फ्यूचर में जो एजुकेशन आने वाला है उसका नाम है एजुकेशन 5.0। यानी हम उसमें फोकस करेंगे एथिक्स, ह्यूमनिज्म बेस्ड एजुकेशन। नाउ थोड़ा सा हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन 1.0 उसको हम कहते हैं पैसिव टीचर सेंटर रोल लर्निंग। यानी कि ये एजुकेशन प्री 20th सेंचुरी थी। 20th सेंचुरी में हमारा एजुकेशन आया जिसको कहते हैं एजुकेशन 2.0। यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्रिटिकल थिंकिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। मैंने कहा आपसे कि जो हमारा एजुकेशन में इंटीग्रेशन हुआ टेक्नोलॉजी का, तो बर्थ हो गया हमारा एजुकेशन 2.0। यानी कि एजुकेशन 2.0 में ही से हमारा टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो गया। उसके बाद अर्ली 21st सेंचुरी एजुकेशन 3.0 का बर्थ हुआ, जिसमें हम फोकस करते थे पर्सनलाइज्ड डिजिटल लिटरेसी, 21st सेंचुरी स्किल्स। एंड जो प्रेजेंट है आज के डेट में, उसको हम कहते हैं एजुकेशन 4.0। दैट इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कोलैबोरेशंस इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स।
एंड नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो होने वाला है एजुकेशन 5.0. इन एजुकेशन 5.0 विल फोकस ऑन द होलिस्टिक इमोशनल इंटेलिजेंस इकोलॉजी लर्निंग. तो ये रहा हमारा इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन. अब हम चलते हैं टेक्नोलॉजी पे. अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इन शॉर्ट कि एनईपी क्या है, एनईपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस एनईपी के ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी. आपने ये भी देखा कि एजुकेशन पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 के बारे में आपको पता चला. अब हम बात करेंगे टोटली कि हम टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे करेंगे टू मेक द एजुकेशन मोर पावरफुल, मोर फ्रूटफुल. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में बात करते हैं आपसे. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन को डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस टू द कंप्यूटर, people have devised tools for facilitating learning and the communications. Technology is not inherently good or bad. The outcome depends on how it is used. यहां पे मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग भी कभी कभी डिस्कस करते होंगे एज ए टीचर. कुछ टीचरों का कहना है कि जो डस्टर चौक की पढ़ाई होती है वो अच्छी होती है. कुछ टीचर कहते होंगे कि नहीं, पीपीटी से पढ़ाना अच्छा है. तो कई दफा डिस्कशन हो जाता है. कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छी बात है. कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहिए. तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का जो यूज करना बैड और गुड हम डिसाइड कब करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं. किसी भी टेक्नोलॉजी का जो बैड और गुड जो है उसके इस्तेमाल पे निर्भर करता है. चलिए मैं इसको बहुत एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं आपको कि टेक्नोलॉजी को हम यूज करके बताएंगे वो सही है या गलत है. कैसे? देखिए, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी यानी कि पीपीटी यूज करने जा रहे हैं. अगर आपने क्या किया, उस पीपीटी पे सारे के सारे टेक्स्ट डाल दिया और क्लासरूम में जाकर आप सिर्फ और सिर्फ पीपीटी को रीड कर रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि एक टीचर, कोई भी इंसान पीपीटी को लेकर क्लासरूम में डिस्प्ले करे और रीड कर दे तो कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होगी. कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को आप खड़ा कर दीजिए क्लासरूम में, पीपीटी दे दीजिए और पीपीटी को रीड कर देगा. दैट मींस हियर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज बैड. यानी कि टेक्नोलॉजी का बैड गुड डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. तो आपने गलत इस्तेमाल किया यानी आपने सही नहीं किया उसका. यानी कि ना आपके पास नॉलेज होगा ना बच्चे समझ पाएंगे. अब इसी टेक्नोलॉजी का गुड यूज, आप क्लास में पीपीटी यूज कर रहे हैं सिर्फ डायग्राम दिखाने के लिए, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से अगर ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना रहे हैं तो जो डायग्राम बनाने में टाइम आपका बर्बाद होगा, उस टाइम को आप मोर एक्सप्लेनेशंस में पीपीटी के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है. आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से. तो दैट इज द गुड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. इसीलिए मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी इज नॉट इनहेरेंटली गुड और बैड. द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज यूज. यानी इसका जो कैसे आप यूज कर. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारे लाइफ में, डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है. अब हम बात करते हैं आईसीटी का. 3 वर्ड है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशंस एंड द टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो
तो डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन, कोई भी बात अपने बताते, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो हमारा इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बच्चों तक उसको हम पहुंचाते हैं क्लासरूम। वहां पे कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। अब हम देखिए, यहां दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर में बैठे हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लोग बैठे हुए हैं, और मेरे मैसेज को आप रिसीव कर रहे हैं, मेरे इंफॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हैं, मैं यहां से कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो आप दूर बैठे हुए हमारे मैसेज को सुन रहे हैं। इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी का हाथ, यानी कि डिस्टेंस लोकेशंस पे हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर दे विद द हेल्प ऑफ ए टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज द आईसीटी। यानी कि अब हम जो लेक्चर दे रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आवाज को इस मशीन तक पहुंचा रहे हैं, और मशीन मेरे आवाज को आप तक पहुंचा रही है। तो यहां पे टेक्नोलॉजी आपका जूम यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं आईसीटी। तो आईसीटी एजुकेशन में ही नहीं, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, आईसीटी का जो यूज है, हम व्हीकल ट्रैकिंग में यूज करते हैं, हम राउटिंग में करते हैं, डिलीवरी शेड्यूलिंग में करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, बार कोडिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एड्रेस सिस्टम, फ्राइट ऑडिटिंग, सप्लायर मैनेजमेंट, ईडीआई। यानी कहने का मतलब है कि हम आईसीटी का इस्तेमाल आज के डेट में हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, और आज के डेट में आईसीटी के बगैर इंसान को सरवाइव करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। आपसे कहा जाए कि एक दिन के लिए आप मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दीजिए, सोचिए आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आपसे कहा जाए कि आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप का यूज करना 2 दिन बंद कर दीजिए, आप नहीं करना, आप सोचिए आपके माइंड पे क्या इफेक्ट होगा। आपसे कहा जाए कि आप ईमेल करना बंद कर दीजिए, तो सोचिए आपके दिमाग पे क्या इफेक्ट होगा। कि आज के डेट में हम सब लोग आईसीटी से जुड़े हुए हैं, और आईसीटी को हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। अपने मुश्किल प्रॉब्लम्स को, अपने काम को आसान बनाने के लिए हम आईसीटी का आज के डेट में यूज कर रहे हैं। तो आईसीटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब हम देखते हैं कि आईसीटी का कंपोनेंट क्या क्या है। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उससे कई कंपोनेंट है। घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ईंट है, बालू है, सीमेंट है। इसी तरह से अगर हम आईसीटी का यूज करें तो आईसीटी के लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो आईसीटी का कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर। यानी कि अगर हार्डवेयर नहीं है तो आप आईसीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार्डवेयर का मतलब होता है ऑल द फिजिकल कंपोनेंट, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पीडीए हो, मोबाइल फोन हो, और हर डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आपका हार्ड डिस्क होना चाहिए, आपका मेमोरी, आपका रैम होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए या डिस्प्ले यूनिट होना चाहिए, कीपैड होना चाहिए, स्मार्ट कीपैड होना चाहिए, या टच स्क्रीन होना चाहिए। इन सारे चीजों की जरूरत होती है आईसीटी को यूज करने। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जिसके बगैर हम हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाते। तो जितने भी हार्डवेयर हैं उसको यूज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है मशीन को भी मैनेज करता है और हमारे डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है।
तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए हम उस सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं। जैसा कि एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। अगर आप लैपटॉप चलाना चाहते हैं, लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज हो, आईओएस हो, किसी भी तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन, चाहे वो डेस्कटॉप हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। दूसरी टाइप के सॉफ्टवेयर को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं लैंग्वेज और दूसरे को कहते हैं पैकेजेस। अब लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर जो है इंटेलिजेंट नहीं होता है। कंप्यूटर ऑपरेट करता है 0 एंड 1 पे, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पे। जबकि हम लोग इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं तो देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द मशीन एंड द ह्यूमन बीइंग। तो मशीन एंड ह्यूमन बीइंग के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज जो है तीन तरह का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब हम इसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उसमें काम करते हैं, क्योंकि आप जनरल टीचर हैं, तो हम बात करेंगे जो एजुकेशन में आपको इस्तेमाल में लाए। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, पैकेज की तरफ। पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन फील्ड में और हम सब लोग यूज करते हैं। पैकेज का यूज हम अपने डे टू डे लाइफ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक टाइम टेबल बनाना है, यानी कि डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में करना है, कभी उस डेटा को एनालिसिस करना है, हमें ग्राफ बनाना है, उस डेटा को विजुलाइज करना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है आपके एजुकेशन में, तो आप यूज करते हैं MS Excel, दैट इज द पैकेज। समटाइम्स यू आर इंटरेस्टेड टू प्रेजेंट योर वर्क इन फ्रंट ऑफ सम पीपल ऑन ए स्क्रीन, तो आप यूज करते हैं प्रेजेंटेशन पैकेज, एग्जाम्पल पावर पॉइंट। कई दफा आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मैंने बात किया क्रेडिट ट्रांसफर जो NEP में कहा गया है, तो उस क्रेडिट को सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट आर स्टडिंग। अब सबके क्रेडिट को आपको स्टोर करना होगा, एक डेटाबेस बनेगा ताकि आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने बच्चे आपके कॉलेज से दूसरे कॉलेज गए, तो किन किन का डेटा को हमें ट्रांसफर करना है। तो एक डेटाबेस बनाने के लिए बहुत सारे आपका नोट्स है, बहुत सारे आपके पास वीडियोज है, तो उस वीडियोज को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस की जरूरत है और फिर हम उस डेटाबेस में डेटा को रखेंगे। तो वहां पे डेटाबेस पैकेज की जरूरत होती है। तो एग्जांपल में ओरेकल है, पैराडॉक्स है, इटिसेट्रा आप यूज करते हैं। कई दफा आप क्या करते हैं, अपनी चीजों को ग्राफिक्स फॉर्म में बनाना है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका डायग्राम बनाना है, तो आप ग्राफिक्स पैकेज का यूज करते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के पैकेजेस को हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऐड हो गया ICT में, जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो लॉकडाउन के पीरियड में लाइफ को सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। पहले मैं एग्जांपल दूं क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो आप सब लोग यूज करते हैं, फिर डिटेल्स में बताऊंगा। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
आप जूम यूज कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप ड्रॉपबॉक्स यूज कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप वन ड्राइव यूज कर रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप गूगल मीट यूज करते हैं, दैट इज द क्लाउड एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप जीमेल यूज करते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सोचिए कि लॉकडाउन पीरियड में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यही सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया था आपने, यानी घर बैठे हुए थे, कहीं नहीं जा रहे थे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो पॉपुलर हुआ लॉकडाउन पीरियड से, और ये जूम जो है टूल है उसी लॉकडाउन पीरियड में पॉपुलर हुआ, जो कि इसको कोई भी नहीं जानता था, जूम जिसको आज यूज कर रहे हैं। जिस जूम के जरिए बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई, लेकिन आज ये जूम एवरीवन, हर एक इंसान यूज कर रहा है। आप गूगल मीट यूज करते हैं, दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। आप ड्रीम व्यू करते हैं, MS टीम यूज करते हैं, दैट ऑल आर द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सोचिए हम डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन आप यूट्यूब में है, गूगल में है, फेसबुक में है, एवरीवेयर पीपल आर राइट नाउ यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ ये लॉकडाउन के पीरियड। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप अपने मशीन पे बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अपने मशीन के जो फिजिकल कंपोनेंट को चेंज किए बगैर आप अपने मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, यानी कि आपके मशीन का जो हार्ड डिस्क है उसको बदलना चाहते हैं तो फिजिकली चेंज किए बगैर आप अपने हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट है उसको अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फिजिकल हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए जिस सॉफ्टवेयर का प्राइस आपको 3 लाख से और एक दिन काम करना हो, तो एक दिन के लिए आप 3 लाख रुपए एक्सपेंड करते हैं तो कितना खराब लगेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से मदद हो जाएगी। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि आप बदायूं में अपने कॉलेज के पास ही रहते हैं और आपने एक कार खरीदे 3 लाख रुपए का, उस कार का यूज नहीं है तो आपका मनी ब्लॉक हो गया। तो क्या करते हैं कि 3 लाख इन्वेस्ट ना करके हमें कार की जरूरत होगी तो हम किराए पे ले लेते हैं, ओला ले लेते हैं, उबर ले लेते हैं। उसी तरह से अगर मकान हमारे पास नहीं है तो हम रेंट पे ले लेते हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम जितने भी हार्डवेयर है उसको रेंट पे दे दें और जितने भी सॉफ्टवेयर उसको रेंट पे दे दें। इसी कंसेप्ट में बेस्ड हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग बना। तो जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस चाहिए आपको, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में है। आप सॉफ्टवेयर को लीजिए, आप 1 घंटा के लीजिए, 2 घंटे के लीजिए, उतना ही पैसा दीजिए। आपको मशीन पे इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होगी। तो एक IP एड्रेस देंगे, आपका इंटरनेट होना चाहिए और लॉगिन पासवर्ड देंगे और आप उसको बिना इंस्टॉल किए आप उसको यूज कर सकते। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अनदर कंपोनेंट दैट इज द इंटरनेट एक्सेस, यानी कि बिना इंटरनेट का आपका काम नहीं चलेगा ICT, क्योंकि ICT का मतलब ही है कि यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन दैट इज एट द फार अवे फ्रॉम यू। तो इंटरनेट एक्सेस इज रिक्वायरमेंट फॉर ICT. And data is also important. You are going to transmit the data. Communications technology. There should be a technology. Technology is essential component of ICT. Without the technology, you are not going to communicate your message from one place to another places. And the transaction sheet. So दोस्तों, ये सारे चीजें हमारे ICT का कंपोनेंट है। तो मैं अब यहीं पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि शेड्यूल में मेरे ख्याल से
नेक्स्ट स्पीकर वेट कर रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी का भी टाइम का वेस्ट करूं, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और फिर हम जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हर टाइम तो 3 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया है, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट द टाइम, क्योंकि हम दूसरे स्पीकर के टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर हम जो स्पीकर होंगे उसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2-3 मिनट दे दें। अगर आपके पास कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट में आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेरी। फिर मैं इस प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट स्पीकर को हैंड ओवर कर दूंगा। डियर फ्रेंड, if you have any query, any questions, feel free to ask. Sir, the next speaker is going to join at 3:45 p.m. So you can take 10 to 12 minutes to complete your session as well नहीं, as हमारे questions. स्पीकर आ चुके हैं दूसरे या? No, sir. So we have already informed the speaker that the session is running a little late, so they will join at 3:45 p.m. instead. मतलब So 10 you मिनट can हमारे, continue. Sure, sir. तो 10 मिनट तक आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तब तक है जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, कुछ समझ में आया? कोई क्वेश्चन आपके जहन पे? क्या समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन आपके जहन पे? क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा लास्ट में, वहां पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके जहन पे कोई सवाल आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। क्या किसी भी पार्टिसिपेंट्स के पास कोई सवाल नहीं आ रहा? Participants, please raise your query and resolve your solution. No one, sir. Please continue. देखिए, हम टीचर हैं ना, हम टीचर की एक बात होनी चाहिए, हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें जहां से भी नॉलेज मिले हमें ले लेना चाहिए। टीचर को बोल्ड होना चाहिए। आप टीचर हैं, एक बात याद रखिएगा कि नॉलेज इक्वल टू 1 बाई ईगो। जैसे ही आप अपने ईगो को इंक्रीज करेंगे, आप नॉलेज को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो जहां से भी आपको नॉलेज मिले, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने पार्टिसिपेंट से कुछ सीखूं। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हमें नहीं आ रहा होगा, तो मैं फ्रेंकली बताऊंगा मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा किसी भी माध्यम से, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए। तो आंसर्स टू नो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर नोट टू इंडियन लैंग्वेज बताऊंगा। अब टाइम तो नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम होगा और आज ही मैं कर देता, कुछ और टूल बताता, लेकिन नेक्स्ट टूल में यहीं से स्टार्ट करूंगा और फिर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको और आपको सिखाऊंगा, ताकि आप एमईपी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। तो पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे बताऊंगा आपको कि आपका टीचिंग स्टाइल आसान हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा। तो वो डॉक्टर समीर, आप सवाल का जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट सेशन में। यानी और भी कोई क्वेरी है आपके पास? और किसी भी पार्टिसिपेंट पास कोई क्वेरी है? क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है, क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर को आने में भी टाइम है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग कैसा लगा? ये कुछ समझ में आया नहीं आया, इतना ही बता दीजिए कम से कम। आप लोग बहुत शाई हैं बात करने में। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा आपको ध्यान पे? It is very nice lecture, sir. जी बताएं। हाँ, आप सब लोग टीचर हैं। हाँ, पार्टिसिपेंट्स चैटिंग में लोग लिख रहे हैं। सर, कोई क्वेरी होने का ये भी मतलब क्या है कि जो भी आपने पढ़ाया वो सबको समझ में आया सर। वेरी नाइस अच्छा, एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर सर। थैंक यू वेरी मच।
देखिए जी, ऐसा है ना, हम टीचर है ना, टीचर को हमेशा ना हंसते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। जब तक आप में हौसला नहीं होगा सीखने का, तब तक हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हमें अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए ना एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से करना होगा, हमें अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ाना होगा, तभी तो हम फ्यूचर बच्चों को बनाएंगे। उसके लिए हमें तो मेहनत करना होगा ना, और सीखना भी होगा। कोई किसी का ओपिनियन है? तो क्वेरी नहीं है, जस्ट आई वांट टू आस्क सर, आपने जो फ्यूचर एथिक्स एंड ह्यूमैनिज्म, तो हाँ, सर इसका कुछ एग्जाम्पल या कुछ ऐसा है, ये वाकई फ्यूचर है या बैक टू हमारी वैदिक सोसाइटी एंड जो उसमें जो हमारा पढ़ाने का तरीका था, ये उससे कनेक्ट कर रहा है सर? देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल को बोला है, सवाल को रेज किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस पर हम बात करें, अभी जो बात कर रहे हैं ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं कि वी आर गोइंग टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन राइट नाउ, जो एजुकेशन 4.0 है। 4.0 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने जा रहे हूं, मैं करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ये कहा गया है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल यूज हो रहा है। कमिंग फ्यूचर में इमोशनल इंटेलिजेंस आप सर्च कीजिएगा, जो इमोशन है ना, इंटेलिजेंस जो इमोशनल, यानी कि हम मशीन को इमोशन देने जा रहे हैं, तो जो वैदिक है ना, उससे कुछ आएगा। देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यस सर, यस सर। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पुराने जमाने में गरीबी में हम मक्के की रोटी खाया करते थे। जो लोग मक्के की रोटी खाते थे वो गरीबी में कहा जाता था। मलमल का कपड़ा पहनते थे वो गरीबी में, लेकिन आज के डेट में मक्के की रोटी अमीर आदमी 5 स्टार होटल में खाता है, बड़ा आदमी मलमल के कपड़े को पहनता है। तो सोचिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इस पे आएगा नेक्स्ट एजुकेशन आने वाला। आजकल पढ़ाई भी जा रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की भी जानकारी हो रही है आपको। जी सर, बताएं सवाल कुछ है संजीव सर। संजीव सर कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव राठौर सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपके ध्यान पे है संजीव सर? जी जी बताएं। ओके, तो कोई आपका तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? So we are looking forward to your next lecture, sir. that will be very important, क्योंकि हम उसी में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीज टेल मी आईसीटी ऑनलाइन कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज हुए हैं, अब देखेंगे। लेकिन मैं आपको इतना करा दूंगा लास्ट क्लास में, आज भी बहुत कराता लेकिन टाइम नहीं मिला, कि आपको आईसीटी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बता दूंगा कि एज ए आप सारे काम खुद कर सकते हैं। हम वीडियो कैसे अपने बनाएंगे, अपने आवाज को, वॉइस को रीजनल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे नोट्स को कन्वर्ट करेंगे, और हम टेक्नोलॉजी को कैसे बनाएंगे कि आप बोलेंगे लेकिन आप नहीं एक्चुअली बोलेंगे, आपका नोट्स जो है टाइप कर देंगे, उसमें नोट्स को पेस्ट कर देंगे और आपका फोटो होगा और आप लगेगा कि आप बोल रहे हैं किसी भी लैंग्वेज। ये सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम नहीं मिला। ठीक है जी। सुरजीत सिंह साहब, मेरी आवाज पहुंची आप तक और आपको समझ में आया होगा शायद, या और कुछ कहना चाहेंगे? ओके सर, मैसेज आ गया। ओके, तो हमारे नेक्स्ट स्पीकर आ गए। आई एम सर्चिंग इट। आशुतोष सर, क्या हमारे नेक्स्ट जी जी, रिसोर्स पर्सन आ चुके हैं सर? जी सर, Okay. कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कि मैं कोई नया चीज स्टार्ट करूंगा तो फिर डिस्टरबेंस होगी, इसलिए हमने कहा कि क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं।
मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, लेक्चर को डिलीवर करके। Sir, we are also feel privileged to have you, sir. Thank you, sir. Thank you for your enlightened presentation, which include the vision outlined in the NEP, which recognizes the transformative potential of ICT in enhancing the teaching and learning process. The policy emphasized on integrating technology into education reflect a commitment to creating a more dynamic, inclusive, and future-ready learning environment. And now, without taking so much time, I would like to introduce our next resource person, Dr. Anurag Kakkar. He is working as an assistant professor at the Department of Economics, HANSRAJ College, University of Delhi since 2019. He completed his PhD from Center of Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, JNU, in 2023. Prior to this, he pursued his Master and MPhil in Economics from JNU and Bachelor in Economics from HANSRAJ College. His area of research interests cover both theoretical and applied investigation of strategic formation of social and economic networks, industrial economics and behavioral economics, and educational economics. The topic of his presentation is research and development. So please welcome Dr. Anurag Kakkar to deliver his presentation. Welcome, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, the organizing team. And I would like to also, as part of the Mahatma HANSRAJ Faculty Development Center or Mahatma HANSRAJ Malaviya Mission Teacher Training Center, I would also like to express my gratitude to Professor Mansaf Alam for such an elaborative session. So let me share my screen. Just a Okay, I hope the screen is visible to everyone. Yes. Is it visible, sir? Okay. Okay, so a very good afternoon, everyone. As ma'am rightly pointed out, I am also serving as a Deputy Director of the Malaviya Mission Teacher Training Center at Mahatma HANSRAJ College. So today in this session, I would like to talk about, I would like to cover the module on research and development as enlisted in the NEP 2020 Orientation and Sensitization program. I would like to mention that in this session, I'm not going to emphasize on the tools and techniques for research and development since it's a interdisciplinary program. So instead of emphasizing on the approach to research, instead of emphasizing on different methodologies for research, I would like to keep this session to talk about the major issues that we deal with research and development in general in our country. I would like to talk about the role research and development plays. I would also like to talk about the current status of the level of research and development in the country. What measures were already taken? What is the status of the level of research and development as enlightened, as envisioned by those measures? I would also like to talk about what NEP 2020 categorically talks about the steps, the ways, the approach that we as a country as a whole have to take in the context of research development, and ultimately I would like to discuss it in the context of higher education institution in India, right? So as it is being, briefly talk about the level of higher education and economic growth. So it is no surprise that higher education and economic growth works in sync. There are plenty of research studies which have established the fact that for any economy to grow as a whole, both in terms of GDP as well as in terms of prosperity, to represent harmonious growth, we see higher education playing a very significant role in contributing to the economic growth. In the domain of enriching, enlightening higher education and indirectly contributing to higher economic growth, designs and techniques in order to contribute to economic growth.
It also, NEP 2020 also, in order to strengthen the autonomous system that is going to be in place, they also talk about reforming financial arrangements. So to both impart knowledge at a higher education level in the country, to enrich the level of knowledge in the country among our youth, and to also offer in proper infrastructure and to fulfill all the needs of our researcher. NEP 2020 talks about reforming financial arrangements. We have I mean, since we live in a very diverse country, diversity can be seen in terms of geography, in terms of physical domain, in terms of culture, religion, languages, and communities. So it has been highlighted that in teaching as well as learning techniques, we need to encourage diversity in order to cater to the need of such diverse set of individuals, diverse set of citizens in our country. It is also important to identify, I mean, it is also important to train our students to cater to very heterogeneous needs of a diverse background and of people from diverse background, and then accordingly design a solution to the problem that they face on a day-to-day life. So for that, it is important that diversity should be encouraged in both teaching and learning approaches, specifically at higher education level. And ultimately, NEP 2020 talks about the fact that we need to foster the development of national and regional postgraduate programs in order for a harmonious growth of our country. And they have identified that the best way to do so is to increase primarily academic as well as non-academic staff members and build research capacity in institutions. If you talk about higher education context, in context of India, so India at current stands as the second largest higher education system in the world. We have managed since independence. We have managed to move from a stage of elitism to massification. So elitism, as the word suggests, that initially it was found that higher education used to be confined to only elite class of our country. But with the measures undertaken by the state, we have now been able to see that higher education level have become more accessible over the period of time. But as I'll mention in my subsequent slides, that we are yet to reach. I mean, although we have moved from elitism to massification, but then it's still an overstatement. We are yet to ensure massification in terms of accessibility of higher education in the country. Partly, the reason for it could be in terms of accessibility and accessibility at an individual level. We have also seen a large and growing role of private sector in contribution towards this massification. Along with the development of state, central, and autonomous institution, we have also seen a rapid growth in private sector institutions coming in and also catering to the growing demand for more accessible higher education institution in the country. Although NEP 2020 talks about strengthening diversity in education, but we have also seen over the years with different committees coming in with their recommendations in place, we have seen some level of diversification in courses, specifically in the context of design of courses, curriculum design, both as in context of mode of delivery, providers, as well as pedagogy. To emphasize further on expansion and massification, so as I can see here that we stand at a gross enrollment ratio. This is as per the All India Survey of Higher Education report 2024. We stand at a gross enrollment ratio of about 28.3%. So this talks about what proportion of our population which can be enrolled at the higher education level is actually enrolled. So out of 100 individuals who are at an age group of being enrolled at higher education institution, only 28.3 or roughly 28 of those individuals are enrolled in general. There's a typo here. Although under NEP 2020, the government aims to improve this gross enrollment ratio to up to 50% by 2035. We already see a diversification in terms of courses to a certain extent. We have promoted curriculum should be designed in such a manner to cater to imbibe multidisciplinary and interdisciplinary approaches in our curriculum.
We have seen at the onset of COVID-19 pandemic, we also see a rapid adoption of different modes of delivery as well as providers, specifically in the context of adoption of ICT techniques, as Professor Mansur rightly talked about. We have seen a growth of private sector, as I already mentioned, but it is also important to highlight here that the public expenditure, the expenditure at part of the state, has not been keeping pace with the expansion or with the growing demand of higher education institutions. We see, because of which, a demand supply mismatch. So partly gross enrollment ratio standing low at 28.3%. Could be attributed to individual willingness to be enrolled at higher education institution, but it is also partly attributed to the demand supply mismatch, where the demand of enrollment at higher education institution is yet to be met with its equivalent supply of higher education institution and the respective seats. But it is also important to highlight that governing and managing such a large and diversified system is complex. So that means a robust system, a more efficient system needs to be put in place to be able to govern and to be able to manage such a large and diverse system in our country. If we talk about if I talk about the massification in the context of being the second largest higher education system in the world, so we currently have about 1,168 universities operating in the country, constituting both private and public universities. We also have about 45,473 colleges operating in the country, both including both private and public colleges, and we also have about 12,002 standalone institutions. So that itself talks about it itself talks about the great number of institutions that are currently running in the country. If we talk about the large role of private sector, so we have about 455 privately managed universities, about 78.6% of colleges in private sector, they themselves account for 65% of the total enrollment. So that means, although in comparison to public universities, we have proportionally less private universities, but we see enrollment being higher in those private universities as compared to public universities. In terms of massification, we currently have 41.3 million students who are enrolled at higher education institution, and which constitutes to gross enrollment ratio of 28.3%. If we talk about important features of NEP 2020, so in order to grow, in order to ensure the success for education institution of our country, and ultimately which can contribute to economic growth, so there's a 5-step approach that NEP 2020 proposes. First is for institution. First, they talk about institutional consolidation and restructuring. Institution consolidation and restructuring does not necessarily mean that, does not really speak about merging or consolidating two or more institutions into one, but it talks about resource sharing. It talks about optimal utilization of resources already in place, along with expansion of those resources, so that probably 2 or more institutions could develop such understanding that they allow their teaching, non-teaching staff, their researchers, their students to access resources from each other. And hence optimal utilization of resources could be ensured. Secondly, talks about the idea of restructuring of degree programs. NEP 2020 emphasizes on the fact that we need to provide larger flexibility, greater flexibility to our students, because not all students come from the same background. They do not really operate under the same environment. They come from different, they have different circumstances in their life. So greater flexibility in terms of choice of courses, choice of papers that they want to study, catering to their need in terms of their area of interest, as well as to also cater to their growing need in terms of whether they want to take a break from their studies, or they want to go for a shorter duration program, or if they want to come back at a later stage of life to complete their degree program. So all that flexibility needs to be talked about and needs to be provided. It talks about providing autonomy to faculty and institutional autonomy. So that means faculty as well as institutions should work towards exploring their area of expertise, their strengths, so that they can work in the direction of their strength, in the direction of their interest, so as to ensure optimal outcome from both faculty as well as institutions.
It talks about emphasis on research. So there's a growing demand for research and innovation in the country to cater to two particular domains. One is to social or economic problem that hinders our growth, that hinders our development. And secondly, to also look for more efficient, more resource efficient, more environmentally friendly techniques of production and operation. So greater emphasis on research is a must. And the fifth and more important feature of NEP 2020 is to ensure that the governance structure, the governance mechanism should be strengthened in such a way where it provides governance to higher education institution in a what is referred to as light but tight kind of a regulation, so that it monitors, but it also, along with it, provides the autonomy to operate with independence. In terms of institutional consolidation and restructuring, the idea is to consolidate 1,113 universities or 43,796 colleges and others into about 15,000 large, well-resourced, vibrant, multidisciplinary institution. Again, as I mentioned already, that the idea is not to consolidate and two institutions into one, but to generate a pool of resources, a pool of institutions with the exhaustive set of resources, so that optimal utilization of those resources could be ensured. At present, we have two types of institutions operating in the country. One we identify as universities, which primarily focuses on research and teaching, and the other is colleges, which are autonomous degree granting colleges, or which are what we usually also refer as teaching institutions. The idea is that at university, although universities have been established with the objective of focusing on research as well as teaching, but colleges somehow miss that bus, because colleges have always been envisioned as an institution which emphasizes on teaching alone. But now under NEP 2020, by the virtue of introducing a 4-year program at undergraduate level with an option for research dissertation, NEP also envisions and it emphasizes on the fact that research can be conducted, can be ensured at an undergraduate level, and hence this distinction between universities and colleges is high time needs to go. If we talk about the significance of research and development, we know that a robust ecosystem of research caters to the rapid changes that we see around our world. It could be in the context of climate change. It could be in the context of growing demand due to population dynamics. It could be in the context of biotechnology space or digital market space, or specifically with the rise of machine learning and artificial intelligence. So we believe that greater research could lead to greater solutions. But despite of this critical importance of research, research and innovation investment in India is at its current time low points. Yes, sir. Which slide are you able to see currently? Okay, wait. I'll just share it again. Is it visible now? Is it moving also now? Okay. Okay, so we were talking about importance of research and development. Despite of the significance of research, we see that currently in India, the research and innovation investment is at its current time low of about 0.7% of GDP, as compared to our peers such as United States of America, which contributes to about 2.8% of their GDP, Israel contributing the highest at 4.3% of its GDP, and South Korea investing close to Israel, which is of 4.2% of GDP. So that means we have a very long way to go as compared to our peers. So if we are competing at a global arena in terms of research and innovation, specifically in the context of output, we also need to understand that our competitors are investing very heavily on research and innovation, and we really lag behind with a greater margin. So we have a very long way to go in terms of realizing that higher emphasis needs to be put on research and innovation. If you talk about research and development in India, we say that higher education institution plays a very vital role in country's R&D ecosystem, because it's the first step, it's the first platform which gives exposure to the future of any country which is
the students to the research and development environment, or it provides an ecosystem. With that, for several decade, Indian government has been aiming to increase India's R&D expenditure to 2% of its GDP, but we are definitely struggling at that end. In this context, to ensure higher investment in promoting, in strengthening, in ensuring research and development in the country, the NEP talks about setting up National Research Foundation, specifically to provide a capacity building support to research and development, both in scientific as well as in the domain of humanities and social sciences. Because one of the biggest regrets in the Indian STEM research ecosystem is due to lack of alignment or vision for linking research and education. The consequence of which we see is visible in a subscale role that the education sector plays in R&D performance. If you talk about role of higher education institution, we see that universities and colleges do contribute in promoting research and development by inculcating the environment of research, by encouraging students to participate in research, by encouraging students to participate in problem solving skills. But a critical analysis appraisal of an Indian higher education system reveals that due to the prevailing systematic deficiencies, it continues to produce graduates that are unemployable because probably they lack in the skills required in the industry, innovative skills to contribute to the industry, or which led to emerging shortage of skilled manpower. This has been attributed to deteriorating standards of education and research, partly to inadequate infrastructure and facilities, and also majorly to large vacancies in both faculty and non-teaching positions, which also resulted in higher student to teacher ratio, which kind of also worked as a discouragement to low student enrollment rate, and ultimately manifested all the consequences that I have talked about. If we look at the participation of government and business enterprises in the higher education sector in 20 and as well as higher education sector in 2020, so we see that this graph represent by orange part of the graph, it represents how much government contribution has been. The brown part of the graph represents how much business contribution has been, and this great representation in the graph represents what is the higher education contribution in terms of. Can somebody confirm if the slides are moving now? Are the slides moving? Can somebody confirm? Yes, sir. Yes, sir. Slide is moving. Okay. If we compare India with our peers, so in terms of key indicators, we can say if we look at expenditure on R&D by all public plus private sector. So if you look at the level of R&D expenditure in absolute terms, so from 2011-12 to 2021, we see in absolute terms the level of R&D expenditure has grown from 65,961 crores to about 1,27,381 crores. But if you look at R&D expenditure as a percentage of GDP, so that has seen a steep fall from 0.76% of GDP being spent during the year around 11-12 to about 0.64% of GDP being spent by 2021, and the current number stands at about 0.7%. If you look at top 10 countries with maximum expenditure on R&D as percentage of GDP, so we see that Israel stands at about 5.35% of their GDP is being spent on R&D. And at the lowest spectrum, we see Finland also contributing at about 2.91% of GDP. So that means in comparison to our peers, there's a larger gap in terms of R&D expenditure being spent as percentage of GDP. If we look at the number of, if you want to look at gender disparity in research, so if you look at out of the total staff in R&D institution standing at about 5,54,000 in 2021, we see about 3,61,000 of them is representative of the scientific staff in R&D institution. The rest represents staff in R&D institution from non-science background. Of the entire 361,000 staff, scientific staff members in R&D institution,
we see only 67,000 of them being approximately women, and it is being predominantly male gender who is enrolled in scientific staff. So there's a gender disparity, greater gender disparity that we need to cater to. If you look at doctorates awarded in sciences and engineering in 2021, out of total 14,000, approximately 15,000 of doctorates awarded in science and technology. About 6,000 were awarded in sciences and 5,000 were awarded in engineering and technology, of which apart from these two, only 200 were awarded in veterinary sciences, 1,700 in agricultural sciences, and only 1,700 approximately in medicine sciences. So across different domains also there's a disparity in terms of doctorates awarded and hence researchers being produced. If we look at how our peers are doing, so in terms of patents filed in countries, so we see India in 2021 has filed for only 61,000 patents, whereas China leading the race of about filing of about 15,000 patents, 15 lakh patents. The closest to us is, obviously, so we're not doing, we are doing relatively better to some of our peers also, for example, Germany, Canada, and Australia. But if we compare it to the one leading the race, so we are still very significantly behind of our peers. If you look at doctorates produced in different countries, so as per 2021 data, in terms of all doctorates produced, India stands about 40,000 doctorates, whereas China stands at about more than 60,000 doctorates. The number is also relatively lower in case of doctorates in science and engineering technology, whereas percentage of science and engineering doctorates, if we see, is significantly very low, standing at 59%. Where we are doing relatively better to our some of our peers, but then again, in comparison to those leading the way, we still stand significantly behind. In terms of researchers per million population, in India, we have about, as per 2021 UNESCO science report, we have in India only about 262 researchers per million population, whereas the tally is being led by Israel, where for each million population, they have about 8,342 researchers. In this particular domain, all our peers are way ahead of us. So this also talks about the growing need of researchers in the country, and hence who can ultimately contribute to research and innovation. If we talk about distribution of R&D institution in the country, so we predominantly have private sector institution. Followed by state sector institutions, which are further followed by central sector institutions, standing at 8%. Universities taking a larger share than the central sector institutions. When I say central sector R&D institutions, these are standalone research institutions, does not constitute state or central universities. And we have a very few public sector institutions. So that means the role of state sector and central sector, as well as higher education institution, needs to grow exponentially. If we talk about, I've already talked about gender participation in R&D support. So we see that the lower graph represents the representation of female gender participation in R&D support by central agencies, science and technology agencies. The orange graph represents male gender participation. So we see that more or less the level of male and female gender there is a gap that has remained all these years. So although female participation is growing proportionately over time, whereas male gender participation is more or less the same, but the gap is still significant enough which needs to be filled over the coming years. Okay, so I'll take question towards the end. Right, so I can see one question, but I'll take it towards the end. Okay, so if we look at national R&D expenditure and its percentage with GDP, as I already mentioned that in terms of absolute numbers, our contribution is growing. Our R&D expenditure is growing, but that is against the steep fall in terms of percentage of GDP. So that means
along with the rate at which the economy is growing, along with the rate at which the population size is growing, the percentage, I mean, how much we should really be contributing, the rate at which the expenditure in R&D should be growing, that rate is definitely falling. If you talk about expenditure on research and development by select major scientific agencies, so this is to show you the disparities. This is to show you the disparity across institutions, that how different institutions are contributing, are spending differently from each other, although all of them are majorly sponsored by the government of India. So we see DRDO leading the way in the 6-year period from 2015 to 2021, where it is also reflective of the fact that we are spending majorly in defense-based research and development. But then that is alarming, because if you look at all other scientific agencies, so their contribution apart from DOS, their spending is significantly lower than DRDO. So my argument here is that I'm not suggesting that DRDO expenditure should be curbed, but rather expenditure in all other agencies should be increased proportionately to match R&D expenditure being undertaken at DRDO as well. Okay, so if you look at percentage share of government and business enterprises sector in R&D, we see that these orange bars represent investment in R&D by government. So that has been, from 1990s till 2021, we see, proportionately, the trend represents that the government investment in R&D is going down, whereas the red graph represents investment in R&D by business enterprises. So all in all, that means investment in R&D needs to come from both public and private enterprises. So that does not mean that one should substitute for the other. So if we see private enterprise contribution growing over the years, that should be matched with facilitation and higher expenditure in order to encourage the private sector also to grow over the years. If you look at R&D performed at higher education institution, because we talked about the role of higher education institution in R&D output, then we see that in the past few years, the total national R&D contribution by higher education institution in major countries range somewhere between 4 to 6.26%. So that means of the entire R&D output, how much of the R&D output comes from higher education institution? We see the range in the entire world going from 4% to 26%, but India is seen to be found at the lower end of the spectrum at only about 4%. So that means of the entire R&D activity, R&D output generated in our country, higher education institution only contribute to 4% of that output. Whereas if we compare it to our peers, so in United States, it stands at 13%, at China, it stands at about 7%. In United Kingdom, it stands the highest at 26%. So that means 26% of the R&D output in United Kingdom comes from their higher education institution. In France and Germany, it also stands very high at 20% in South and 17%. If we compare our neighbors in Southeast Asia, so South Korea and Japan also perform better than us, where they stand at about 9% and 12%. So that means, again, being represented at the lower end of the spectrum also highlights a major problem that we need to tackle, we need to address to, which is contribution of R&D from higher education institutions. If you talk about national R&D expenditure sector-wise, so we see majority of it comes from central sector, standing at about 48% for the year 2020-21, followed by state sector contributing at about 36%, private sector contributing at about, state sector contributing at about 6%, private sector contributing at about 36%, and higher education sector contributing at about 8%. So, obviously, one can always argue that if private sector is contributing, so if there are 100 patents being filed, and 36 of them are coming to private sector, 48 are coming from central sector, 6 are coming from state sector, then obviously it will lead only the way for public sector to higher education institution to contribute to about 8 of them. But the idea is not to compete in proportion with each other, but the idea is to compete in absolute numbers. So idea is that along with private sector, central sector and state sector, higher education also needs to keep the pace, and they should also think of expanding their base.
If you look at India's model, so there's a big five model that we see India following since independence, which is, the entire onus, the entire responsibility falls on this big five government agencies, specifically in the domain of research in science and technology. We see we see Department of Social Science and Technology, Biotechnology, Medical Research, Engineering Research, and Scientific Research have been made responsible for ensuring the environment for research in the country. But we still see, if you look at the background of STEM research in India, we see that most Indian universities and education system been struggling to cultivate a scientific temper in our students. A number of factors have been identified to be responsible for this sorry state of affairs. It could be attributed to poor scientific environment or lack of synergy between higher education institution, industry, and research agenda. We also see, in this context, we generally see that most of the research being conducted at the higher education institutions are found to be restricted to only libraries in the form of dissertation. In terms of thesis, it does not really reach industry, or does not really reach the public policy domain in order to assess the actual practical implication of it. The role envisaged for STEM researchers by higher education institutions is yet to be completely met. We still find that there are few keepers of STEM research. That means the students that we train at our higher education institutions, only few of them, a very small proportion of them, really wants to continue in that domain. They are mostly found to be changing their domain in pursuit of employment. So that leads to underutilization of the capacity of the potential of higher education institution. We can also cater it to multiple factors. So we believe that for quality research, it requires top talent. NEP identify that we need top talent. We need to have access to generous resources. We need to build strong culture and governance system. In context of top talent, we need to have quality. We need to ensure quality in terms of recruitment, both at faculty and staff level, and we need to provide our students with that exposure, with that environment where they can interact with different stakeholders at the higher education institutions. We need to have a subjective versus the objective criteria. So we need to assess the potential of all the stakeholders and then direct them in their area of strength, in their area of interest, so that they can perform better. We need to focus on quality more versus quantity in terms of research. We need to also be working towards retention of talent. So again, brain drain is also very evident, and in the context of academia. So we see top talent moving to different universities, different countries. So we need to develop a mechanism to retain our talent. Also, again, to cater to diverse needs in our country. Due to the prevailing diversity, we need to have expertise, and we need to have people who can cater to such diversity. We need generous resources in the context of providing for research students, provision for research facilities in terms of research and laboratory staff. We need funds, both external as well as internal funds. We need to look out for funding opportunities. We need funds for setting up equipment and laboratories. We need our libraries to be dynamically updated. It needs to be available. It needs to ensure availability of a diverse set of books, research papers, and resources such as databases. We need infrastructure. If specifically we're going to sign MOUs with foreign universities, we need to have faculty and research exchange with them. So we need to have infrastructure adequate enough to match with the international standards. To encourage, to incentivize researchers. If you look at the fact, research, it is no doubt very expensive. If you look at the level of endowment fund in some US universities, so it stands anywhere between 4.6 billion to 37.7 billion. Whereas if you look at the level of endowment per student available in these universities, some of the top universities in US, so we see about 1.9 million per student of endowment fund available to $4.45 million per student endowment fund available at Princeton. So that talks about 80 to 180 lakh per student per year available in endowment at 5%. So that means, again, so if we are going to compete with global
key players. So we need to be careful about the fact that what facilities, what infrastructure do they have access to. We also need to work towards setting up or ensuring a culture of research. So that needs to talk about the ethics and integrity in the entire university. So we need to talk about not just the research methodologies. We need to also focus on culture, ethics, and integrity in research. We need to have more peer group discussions. We need to encourage peer group discussions so as to foster the culture of research among them. We need to work towards collegiality. We need to work towards interdisciplinarity. So it has been identified that to solve a problem in a particular domain, we need to actually think out of the box, and we need to approach it through an interdisciplinary approach, because at times the discipline specific approach seems to not work in that context. We need to work towards tolerance of failures also, and we need to rejoice failures as much as we rejoice success to keep the spirits high, specifically in the research domain. And we need to also work towards our expectation and aspirations, both at individual, department, as well as university levels. If we talk about governance, so we need to work towards ease of transaction in terms of recruitment of research staff and their management, procurement of research research requirements. We need to also talk about ease of transaction in terms of financial management. We need to have systems that support seeking external funding, facilitate it, encourage it. We need to have system to support managing externally funded projects. At times we struggle. We see researchers struggling with the research funding that they get access to from external agencies, but they struggle within their own institutions for accessing those funds. We need to also work towards management of intellectual property rights. We need to also incorporate recognition and promotion policies to promote the research culture. We need to follow consistency over time and space. So that means at all times researchers should be motivated to keep up with the pace of required innovation. We need to also, in terms of resources to faculty, we generally see, and that too at colleges level mostly, and in some universities, I can understand at state and central universities, we see faculty also struggling with a variety of issues with regard to research. So the idea is that resources to faculty should be provided in terms of supporting them with international travel grant, professional development fund. We need to also learn from models of our autonomous institution to ensure seed research grant to new faculty members. There needs to be provision for research grants for productive faculty members. There needs to be top-up grant for first-time funding projects for researchers. We need to imbibe transdisciplinary research grants so that we could promote transdisciplinary research. We need to have equipment grants, credit research funding at institution levels. Along with the faculty, we need to also cater to the needs of PhD students, more or less all in the domain that I've talked about in the context of faculty, such as international travel grants, to have exchange programs to ensure semesters overseas so that they can get adequate exposure. There needs to be credit research funding, top-up fellowship, and support them in the form of fellowship as long as it takes them to complete their research project. Another important part is to focus on catalyzing R&D and in the form of industry academic collaboration. I have already mentioned that research and higher education institution, in terms of contribution to research output, at times it is the numbers that I gave you may be a understatement, possibly because the research at higher education institution fails to reach at the industry level to be applied. So that means that gap between industry and academia in terms of R&D activities undertaken at academic level and its application in the industry needs to be bridged. There are in general 5 building blocks for building a strong R&D ecosystem, specifically in sync with the industry. One is to enable regulatory landscape. Second is to ensure robust funding support. Third, and more importantly, building strong linkages between academia and industry. Fourth is to put in place a favorable policy landscape, and fifth is to ensure high quality infrastructure. In order to strengthen industry academic collaboration, we need to strengthen academic talent and academic infrastructure.
and we need to set up strong governance framework to build trust and accountability, and also to look for linking opportunities so that industry is made aware of the research being done in academia, and academics should be made aware of the constant needs for research and innovation at the industry level, so that the gap could be bridged. We need to also work towards developing an external ecosystem to facilitate research. So we see in now that culture is coming in Indian institution as well, where industries are setting up research facilities, research. They are providing with research funds, research infrastructure, and academics. And academics they work towards purposeful research, which can be utilized in industry. We need to strengthen our policy framework. We need to work towards company-specific research. We need to set up company-specific research fund in collaboration with industry. All in all, the key objectives of R&D and NEP is to enhance the quality of education through research. So it's actually a two-way. So it's also to enhance the quality of education through research, and ultimately enhance the quality of research through education as well. To do so, it has been suggested to promote interdisciplinary research and collaboration, foster a culture of innovation and entrepreneurship at the academic institution level. Now coming back to the prominent suggestion under NEP is to set up a National Research Foundation. The idea is to understand the vital role R&D plays. With this, NRF has been proposed to be set up to play an active role in promotion and advancement of research. NRF is expected to promote basic as well as high quality advanced research in both universities and colleges. So NRF has been set up to promote research specifically at the academic institution, higher education institution in the country. It is expected to reshape and strengthen the existing fragmented research structure in the country. So it is not just to expand the facilities, the infrastructure, but it is also to ensure optimal utilization of the current facilities and infrastructure. NRF is also expected to support outstanding peer review research and actively seed research in universities and colleges through research grant. It is also expected to enable and support vibrant and high quality research and innovation culture in both higher education institution. Just a minute. Okay. If we look at the purpose of National Research Foundation, it is to provide opportunities to researchers from marginalized areas, communities, and different socioeconomic groups to come forward to participate, to promote, and to generate research output to cater to their community-specific or region-specific problems. It will also look into increasing the potential of number of research seat in higher education institutions. They are also expected to support state level universities and colleges in both funding and promotion of research. It is expected to enhance the quality of available research output. NRF is also expected to work as a networking body to promote collaboration between researchers and institutions through procedures both within and outside the country. NRF is also expected to bridge somewhat the gap between industry and academia in terms of research. It aims to involve colleges and universities in scientific research, because at present less than 1% of nearly 40,000 higher education institutions are actively found to be engaged in research. The primary activity would involve funding competitive research, monitoring the level of research, peer review grant proposals, to provide for seed grants, to look at to ensure the growth of institution in the form of research institution, to facilitate research. It will work as a liaison between researchers and relevant branches of government as well as industry, so that research scholars are constantly made aware of the most urgent national research issues, so that policymakers are constantly made aware of the latest research breakthroughs being done at higher education institutions. It will also recognize outstanding research and progress of the country. In order to promote peer review research and seed grants, it has already set up a 4-tier review system where preliminarily researchers can apply for research grant through a research proposal, which will be reviewed by experts, finally reviewed by the consultation of government body, and ultimately the executive committee will take a decision and disburse the research grant. If you look at the funding and collaboration, NRF will provide merit-based competitive funding
NRF will be set up with a composition that it will be governed by a board chaired by the Prime Minister. The board is expected to be made up of some of the best researchers and innovators across fields, both within India and outside. PM will be the ex officio president of the board, and Union Minister of Science and Technology, Ministry of Education will also be the ex officio vice presidents. NRF funding will be governed by Executive Council, chaired by the Principal Scientific Advisor to the Government of India. In 2021-22 budget, union budget, an outlay of 50,000 crores over 5 years was announced for National Research Foundation to promote research, and as part of the promotion, it will also work towards establishing research and innovation center in most promising institutions across the country. Okay, so that was my presentation. So covering the current status of research, what measures have been proposed in NEP, where do we stand as compared to our peers, and what do we really need to do? Okay. So with that, I'll stop my screen. I'll be happy to take any questions. So I could see there were already 3 questions. The first question is by Dr. Sukhneet Suri. I would like to ask 2 questions. What are the salient reasons for low patent filing rates? Primarily, it can be attributed to low research output to begin with, and secondly, it could be attributed to awareness in terms of what kind of research is being done. Thirdly, it could also be attributed to low research output could be attributed to the knowledge gap in terms of what kind of research is required in the industry. Also, it could be attributed to encouragement. Whether there is awareness among researchers, how actively they are engaged, and whether they are being encouraged by their parent institutions to actually file for patents. Also, what support is government providing to government HEI teachers to file patents? So, at the institution level, we see encouragement in the form of incentivization in terms of recognition for filing patents. So institutions are encouraged through accreditation as well as ranking because it is important for, it's an important criteria for institutions to participate in accreditation and ranking. So at the institution level, at the researcher level, so incentivization is the primarily motive. But under NRF, so there will be recognitions identified for patent filing so as to encourage researchers to work in their domain and publicize their work through filing patent. I hope that answers your question. There's an anonymous attendee who says that, sir, what should be done by the higher authorities in R&D to enhance research beside lab of heavy studied instruments to land, and what center motivate this lab to land research? I'm talking about the government colleges which have not a fully fledged and well-developed research laboratories where researchers are eager to love research. How can she be research fearless? How can she do research fearlessly with little bit of funding? Okay, so in that domain, obviously this problem has been identified by NEP, and for that reason they talk about consolidation of institution. So by consolidation of institutions, so I agree. We do not have homogeneous facilities across all institutions in the country. So with that, the idea is, for instance, if there are 2 institutions, one who has a fully established laboratory, but they do not have adequate number of researchers or researchers expertise who have an expertise in using that equipment. But then on the other hand, we have other institutions who can provide for those researchers who have an expertise to participate and utilize that lab. So the consolidation, the association of institutions will be able to bridge that gap, right? Along with expansion of research facilities in all institutions, NEP 2020 and NRF primarily also would look at how optimally the current facilities are being utilized. And in order to optimally utilize the current facilities, they talk about consolidation, right? Okay, so Dr. Vinay Kumar Singh wants to know, what can I do if head of institution don't give NOC to do the research outside India? Okay, so that's a problem at the administration level, right? So obviously, one of the primary incentive that a researcher can give it to its institution is in terms of better accreditation and ranking, because research collaboration
within country and across country also plays a significant role in terms of accreditation. So the next time you go and apply for an NOC, do talk about that part as well. Secondly, you can always write to, you can always write to authorities higher up seeking their intervention. But incentivization for both researchers institution is the key to move forward. Incentive comes after filing patents. So incentives, obviously, incentives will come after. I mean, there are two ways. So incentives will come after filing patents. So the idea of incentives upon filing patents, upon research output, is to encourage and is to ensure that the research culture is developed. Obviously, to actually participate in research, the funding could be provided through NRF. We already have institutions, we already have autonomous bodies who review research proposal and provides for grant. So for research process, the incentive comes from those research grants, and for successful researchers, incentives in terms of recognitions comes after the patent or research output. Right. So I hope that answers your question. But if there's any other query, sir, how the structuring of degree program will be fruitful for BSc and MSc students in terms of flexibility? Okay, so see, the idea is that again, the idea originates from the fact that each student is unique. Each student has their own strengths. Each student has their own area of expertise. They do come from different backgrounds and they do come across different circumstances in their life, right? So flexibility is to allow them to utilize their potential to the optimum, right? We generally see, currently we are experiencing interdisciplinary research. We see a student pursuing computer science, ultimately interested in financial market modeling. So that means if they are doing well, if they are really publishing papers in that domain, so that means their primary interest lies there, and the tools that they have learned in as part of their degree program in computer science, by the virtue of elective papers available in financial markets, they were able to really apply their tools. So flexibility somewhat caters to, flexibility takes away the restriction that we put on any researcher, any potential researcher. Okay, expenditure on R&D significantly reduced to 0.64% of GDP. How it could be related to the first objective of NEP? Again, so I primarily talked about the fact that the state needs to realize, the government of India also needs to understand that it needs to work towards, it needs to, NEP also talks about the fact, which is the Government of India document. It talks about the fact that government will always have a significant role to play, and it's high time that they realize it. And with that objective, through NRF, they're trying to pump in more investment and hence expand expand the base for R&D expenditure. How the higher education contribution can be increased in R&D? Again, by engaging students from the undergraduate levels in research, by providing for flexibility in researchers to pursue their field of choice, by facilitating them through research facilities and funds. Okay. Okay, I can see there's a comment that generally project funds are allotted to well-reputed institutions. So the key to move forward in this direction is to collaborate. We generally see institutions collaborating. So if you feel that is the way, that is the trend, then I would encourage that you also collaborate with such institutions from whom you see large number of researchers getting project allocated. Although I fail to believe that the project is not evaluated on its merit, that's hardly unlikely. So work towards the merit and collaborate is what I would say. So if the NEP 2020 talks about consolidation, collaboration at the institute level, I think as a researcher also we need to work towards collaboration at our individual level. Okay. Any other question? Any other question? If anybody wants to ask, feel free to ask. Okay, I can't. Okay, there are. Okay. Any other question? Thank you, Any sir. other comment? If anybody wants Thank to you, sir, make. for your nice lecture. So one question in chat box.
Ma'am, I have, okay. So what institution promote research with college teachers with grant as well as collaboration? How one can searching for a potential collaborator, that responsibility falls on the researcher. Obviously, institutions, by the virtue of organizing seminars, workshop, conferences, they can provide you the platform where you interact, where you engage, where you network with people from your own field or from area of your interest. So that institutions can do, and that's the primary aim of conferences, so that you can be made aware of the ongoing research, you can interact with people working in that particular area domain. But ultimately the search for this, the responsibility of it will fall on the individual researcher. Okay. Any other question? Thank you, sir. पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर उनकी और भी क्वेरीज हैं तो वो चैट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। हमारे सारे रिसोर्स पर्सन उसमें जुड़े हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है इन फ्यूचर। Thank you very much, sir, for your informative session with so many facts and figures and presentation, which includes the establishment of the NRF is a significant step forward in promoting research excellence. I extend my sincere gratitude to the policymakers and stakeholders involved for creating this vital platform, which will provide necessary resources and guidance for cutting-edge research across disciplines. Thank you so much, sir. आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा और जैसे पार्टिसिपेंट भी हमारे काफी इंटरेस्ट ले रहे थे, इनके क्वेश्चंस जो क्वेरीज थी उनसे साफ समझ में आता है कि सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत ध्यान से आपके लेक्चर्स को सुना, आपके फैक्ट्स और फिगर्स टेबल्स आपने दिखाई, शो की, उससे काफी डीप। और मैं पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने भी इतने ध्यान से सारे लेक्चर्स को सुना। हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन से उन्होंने जो भी नॉलेज गेन करनी थी, आई एम श्योर उन्होंने की होगी। लास्टली मैं डॉक्टर संजीव राठौर सर को ये पूरा मंच हैंड ओवर करना चाहती हूँ कि सर इसको कंक्लूड करके करें। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कक्कड़ फॉर योर नाइस लेक्चर। सभी पार्टिसिपेंट्स ने सेशन को एंटरटेन किया है, उसका आनंद लिया है और बहुत अच्छा लेक्चर है सर। और कई बार ऐसा आता है कि जब क्वेरी नहीं आती है तो ऐसा लगता है या तो कि लेक्चर समझ में नहीं आया या फिर बहुत बड़ा कोई ऐसा है कि किसी को कोई क्वेरी नहीं है। तो यहाँ पर वास्तव में सर क्वेरी नहीं है, सभी लोग बड़ा एंटरटेन होके उसको मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे हैं। तो अच्छा है सर, हंसराज कॉलेज के साथ में हम देश भर के विभिन्न राज्यों को के शिक्षकों को ये एनईपी की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के इनॉग्रल सेशन की वजह से जो भी टेक्निकल इश्यूज आए, कल के सेशन में आप लोग 145 तक जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। 140 के अराउंड हम इसको ओपन करते हैं हंसराज कॉलेज के थ्रू, और सारे टेक्निकल सेशन का 10 अक्टूबर तक आप लोग एंटरटेन करेंगे। और लास्ट डे आपका एक फीडबैक सेशन होगा जिसके बेस पर आपको सर्टिफिकेट अलाउ होगा, और आपके अटेंडेंस पर डे मॉनिटर की जा रही है। ये बहुत वैल्यूएबल है। मैं देख पा रहा हूँ कि 103 पार्टिसिपेंट इस समय अवेलेबल हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर अस, है नहीं। और अगर किसी को सर्टिफिकेट इशू ना हो किसी भी कारणवश, तो दे आर रेस्पॉन्सिबल देमसेल्फ कि वो ऐसी कोई उन्हें यूजीसी गाइडलाइंस के नॉर्म्स के अनुरूप ये सब हो रहा है। तो सभी लोग अपने अटेंडेंस के लिए थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे और अटेंडेंस जरूरी हो। सबके पास डाटा कंप्लीट करके अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जिससे कि आप किसी भी तरीके से सेशन के ड्यूरिंग लेफ्ट न होने पाए। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कक्कड़ को पुनः मेरा एक बार धन्यवाद। आपने बहुत ही टाइम में कंप्लीट इसको किया है और आप लोग एक्सपर्ट तो हो ही गए हैं, है ना। मालवीय मिशन के थैंक यू सो मच सर फॉर काइंड सेंटर को वर्ड्स। इस तरीके से भारत में चला रहे हैं, और राजकीय महाविद्यालय बदायूं के साथ आपने एमओयू करके एक शिक्षकों के साथ वो अच्छा किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू इंटीरियर के टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये दैट इज नॉट फॉर आवर सिस्टम। थैंक यू सर पार्टिसिपेंट। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Thank you. You can leave the meeting. Thank you so much, sir.